Okay, welcome again. So, in the last session, we have started with the Flask and the web development framework of Python, which is used to develop web GUIs or the web applications. And actually, you can create websites using this Python framework. So, in this lecture, we are going to get it further and we are going to implement a small project using the Flask framework. So, we'll discuss start to end how to create a web application, how to have a project, and that will be hosted on some local server or on the local host. So this time we are going to create a small website for our previous projects that we have discussed, and the same concept can be applied to any other project that you can or you can implement. So it can be house price prediction, it can be rainfall prediction, it can be salary prediction, stock price prediction, anything can be done, and the similar kind of system can be developed. So for this purpose, I will be using the previous project that we have actually created using KNN classifier, and we have predicted whether the particular user is going to purchase the car or not based on the age of that user and the salary of that user. And for that purpose, we were having the data set. So again, I will be opening that dataset just to show you. So here is the user ID and the number of users we are having, their age and their estimated salary we are having. So let's say if the age is 19 and the estimated salary is 19,000 per month, in that case the user is not going to purchase the car. But here, if you see, the age is 32 and the estimated salary is around 1.5 lakh per month. In this particular case, the user is going to purchase the car. So that's what this data set is all about. So using this particular data set, we are going to predict whether the particular user is going to purchase the car or not. So what we'll do, we will have a system where we will put the salary and age of that person as an input, and the system will process that thing. We will train the machine learning model, and at the end it will print or it will predict whether this user is going to purchase the car or not. For example, you are running a let's say the car showroom, and number of users are visiting you just to inquire about the new car. And as an owner of this particular showroom, you have to predict whether the visited customer is going to purchase the car or not. So you will take number of times the car dealers used to fill a form. The user has to fill that form where he has to put all the information, so maybe the regarding the job and other stuff. So in that case, the that showroom owner or that system can predict whether this visited customer is going to purchase the car or not going to purchase the car. So that's the system, that small portal we are going to design in today's session. So we'll start with very beginning, start to end, everything we are going to discuss about this thing. So that's all about this data set. So now I will be opening the uh, ID in this particular code or in this particular folder. So this is the Visual Studio ID that I have opened in the current folder, and this is the previous thing that we have done. So this was in the machine learning module, or in the supervised machine learning module, or in the classification uh, algorithms. We have seen very first classifier, knn classifier, k nearest neighbor classifier. So again, I will revise the few steps and I will run this code here also. So here we are using this numpy, pandas and matplotlib libraries, and we are loading this social network ads.csv as a dataset. This dataset contains the user information, their age and their estimated salary, and based on that we will be predicting whether the user is going to purchase the car or not. Next, we are having this predictors and target variables. That means x and y. So dependent and independent variables we have separated over here. And after that, splitting the data set into training and test set. So as you know, 80% data will be used for the training purpose, and only 20% data will be used for the testing purpose. So this is this thing. And after that, we are having this feature scaling. So standard scaler we are using over here, as this is the a KNN algorithm which works on the Euclidean distance. So the feature scaling is important. So the standard scaler we are using here, and we are scaling of our data. After that, after scaling the data, it's time to fit or train
the KNN classifier. So K nearest neighbor classifier. Number of neighbors we have set to 5, and after that we have trained this model by X train, Y train, and this is the classifier.fit function, and this will be used to train or fit the what we can say, the training set only. Okay, so on the training set only we are training our model, and once the model is trained, now this classifier is ready to predict the real world data. So in this case, we have calculated the performance, and this was printed using the confusion matrix. And obviously, we can also calculate the score of this, or the accuracy score, and you can also print it out. And in order to calculate the accuracy, I have suggested some formula: true positive, true negative, these things. And I hope you have tried this as an assignment or as an homework. And the last and final step was prediction for real world data. Now the real world data was this age and this salary. Now what we can do over here, you can just take from the user also. So it will be int input, and here we can ask the user enter the age, and of course here also you can ask the user int input. You can ask enter the salary. Okay, right. And now this will be taken as a test sample, and the test sample can be created using this one. And this is the test sample, age and salary. And now sc dot fit. Oh, sorry, there is small mistake here. It should be sc dot transform only. Okay, fit transform means train plus transform to some different, as this is standard scalar. So initially here at the top, while defining the standard scalar, we will have to use fit transform, right? Here we will be using fit transform function only, but here we should use transform only. Okay, here it will be transform only, not the fit transform, because the fit is nothing but fitting plus transforming, but we need only transforming step, we don't need fitting all our stuff. So only transform test sample, and then it will predict the result whether it will be 0 or 1. If it is 0, that means the user is not going to purchase the car, and if it is 1, that means the user is going to purchase the car. And in that case, you can mention over here also, like if this okay, so this is actually a result. uh, what I can do over here, so this I can calculate as result equals to this classifier dot predict. This one I will be copying over here and will paste over here, and then here I will be writing result, this variable, right? Okay, is there anything wrong over here? No. Fine. Now here actually, if you want to check or if you want to print it out, then you can write like this: result of 0 is equal to 0. In that case, print the user will not purchase the car. Okay. Else print user will purchase the car. Okay, so now that's what the KNN classifier is all about, that we have seen, and this is how it can be implemented. Now, if I run this code, simply if I run this one, I will have to enter the age of the person. I think something is wrong. Okay. Okay, let me check.
Okay, need to reshare the screen. Okay, so this is the KNN classifier. So once I run, it will ask for the enter the age of the person. Then I will enter, let's say 19, and then it is asking for the salary. So I will be entering, let's say 19,000, for example. And in this case, the result is zero, and it says user will not purchase the car. And if I run this again, and let's say we'll put something different, we'll try for some different value, let's say 45, and then the salary, let's say 80,000, for example, we put it like this. And here the result is equal to 1, and in this case it says the user is going to purchase the car. Okay, so this is all about KNN classifier that we have studied previously. Now objective for today's session is to implement an project which will have a web GUI which will also run in the mobile phone as well as in the computers as well. And here it will be a small website or web application where you will put these values, and there you will have a button, and once you click that button it will be displaying whether the user is going to purchase the car or not. And this kind of software, small software, can be given to the car dealerships, and they can be the end users of this particular software. Okay, so now let's try this, and we will be designing a small web application using the Flask framework, and inside that we will be creating number of things. Now for that purpose I will be creating a new file, and this file I will be naming it something. So let's create a new file and just give some name to this file. Let's say mysite.py, because it will be a website. So it will be mysite.py. Okay, like this. And now here we can start implementing our Flask. So from Flask import, so I'll write import star so that it will import everything. So we don't worry about importing the render template, redirect, and all this stuff. So it will import everything. Okay, and then app equals to this Flask, and then you just give some name. So it's double underscore name double underscore as that of yesterday's thing. And then we'll create a small thing that is at the app dot root, and the very first root, that's what we're going to give. It's this one only. And inside that there will be some function. So there will be a function called def, and you may give any function name, or let's say home, or let's say I give as a car, and then colon, and here simply render template. And as we are going to create a HTML document for this, so render template, let's create a car.html file. Okay, so this file we will be creating shortly. And at the end, as you know, this will be if the double underscore name double underscore is equals to double underscore main double underscore. In this case only, you will have to run this app dot run, and obviously you will have to specify the host, and it will be 0.0.0.0, and then obviously the port number will be 5000, and obviously if you are making some changes it should reflect on the website, or there should not be any need of reloading the server. So that's what very simple web application where the HTML template will be rendered. Now in order to have this HTML template, we should create a HTML file or a folder in which this car.html will be stored. Now let's create a folder first, and here this folder will be templates. This is what we have seen yesterday, templates. And inside the templates we will be creating new file, and this will be car.html. That's it. And let's check whether it is working, because now right now the HTML file is completely empty. No worries with that. And now we'll be putting here localhost colon 5000, and as it's showing that it's did not return a valid response because uh, okay, there is a small problem in the code.
Here it's only render template, but here has to be a return function. Return render template. Okay, it should be return render template. Like this, it should be there. Only in that case, it can return a valid response. Now, as this HTML file is completely empty, not even a single line code is there inside that HTML file. So that's why we are seeing here completely blank thing. Okay, it's not showing any kind of error, but it's completely blank thing. Now, why it is blank? Because there is nothing inside the HTML file. So what we should write inside the HTML file? So small HTML code. लेकिन क्या होना चाहिए कोड उसके अंदर क्या होगा? तो कोड उसके अंदर क्या होगा कि दो टेक्स्ट इनपुट्स होंगे जिसके अंदर मैं कुछ वैल्यू पुटअप करूंगा. एक इनपुट होगा एज के लिए एंड वन विल बी फॉर द सैलरी. ओके, एंड एक बटन होना चाहिए दैट विल बी अ प्रेडिक्ट बटन जिसको मैं क्लिक करने के बाद इट विल जनरेट सम रिजल्ट. सो दैट्स व्हाट वी आर interested in that particular HTML document. So now we can start writing the HTML code over here. So as usual, here you should write the HTML tag first of all. So this tag is even not required, but we'll write. And if you want to give some title to your tab, then you can specify this head tag. And inside that, you can mention the title tag. And the title tag is actually going to give the title to your tab of your website. And here you can write, let's say, car purchase. Now if you refresh the page, you will see some difference. Now you see here there is car purchase on the top. This name of this tab is car purchase. Now something is added. Okay, now this is fine. Now next is let's add a body, and inside the body we will be putting whatever content we need. So this will be a body tag, and here we'll be writing, let's say, some header. That's the car or the heading we can put over here. And the first heading will be, let's say, h1 heading we can write. So this will be a heading to our page, and here I can write car purchase prediction using machine learning. Okay, this could be a title of your project or heading of your website. And now if you refresh the page, we will see some difference. Now this is how the car purchase prediction using machine learning. So that's what we are getting after refreshing that. Okay, right now we are not making any changes in the Python script, but we are just adding some content in that. So HTML is just like a text, but it is having some tags and all that you are well familiar with. And just we have to put some tags and their corresponding things. Now what we need a form. Okay, that form has to be submitted. Now in that form, we will be having first input as the age of the user, and the second input will be the salary of that user. So basically we need a form. So we will create a form over here. After this we will create a form. So using the form tab available in HTML, so this is the tab, and now we can write something. Now first of all, we'll create a label first. So this will be a label, and this label will be something. So for this label we can also use some, let's say, h4 heading, so that it will be in terms of some heading. So here we can write enter the age of user. Okay, fine. Now you see some difference. So now the enter the age of user. Now this is the heading 4. That's how its size is like this. If you choose heading 3, then it could be, so this is heading 1, header h1 you are using for this, and this is h4. That's how the font size is very small. So h1, h2, h3, h4, h5, h6, these are some headings that are available in HTML. And not to worry about it, just for the simplicity I'm telling you. Now once we are having this label, what we can do here, we need a input field where we can type that. Okay, so it will be simply a message, but we must be able to type on our website. Now for that purpose, there is input tag in HTML. So it will be an input. Then you have to mention the type of this input. What kind of input is that? Whether it is password kind of input, whether it is text kind of input. So right now it is
text, input is text, so its type is text. So you can mention its type as text. Sorry, it should be text. And then it's fine. Once you mention its type, then its name also you can mention, so that its name is age, so that you can in the program, in the Python side, we can access by this particular name, and that's it. Once you mention these things, it's totally fine. Okay, now you see on our website, if I refresh this thing, now I'll be getting this input field. Now here I can type anything. I can type the age of user, let's say 19. Okay, and now it can be submitted. So it's very simple, that this is how you can create. And now we will have to copy this everything for 2 times, and for another input, and that will be our what we want to add. Here we want to add the salary of user. Okay, it will be a salary of user, and here its name will be salary. You may give any name, but I'm giving as a salary as a name. You may give any other name as well. So by this name, we will refer in the Python code. So its text field's name will be salary. And now, if we refresh our page, now we are having the enter the age of user, and then we are having the enter the salary of user. So we'll put here some salary. Now after, let's say I put 48 is the age, and let's say salary is 19,000. Then I should have a button over here. So after clicking that button, I should have a button over here. So once I will click that button, it will take these two values and it will pass to the machine learning model, and the machine learning model will predict the result. So that's what we are interested now. So right now we have done quite good things, but the button has to be there. Now in order to add the button, now again this is the input only. Button is again the input, but its type is submit. Okay, so it should be input and its type will be submit. Okay, so it's a submit button, and at the end, if you want to give some value or name to it, so definitely value can be given. So value will be predict. So the value is what we will see on the button. So it's a text on that button. So if we refresh, so now the button is added here. Okay, so and this button is the predict button. So after clicking this button, nothing is actually happening because we haven't written anything for this. But here if you print something or put some values and then click on predict, so it's just taking these values, age equal to 48 and salary equal to 19,000, but nothing is happening here. Okay, no action is happening because we haven't done anything in Python side. We just have coded this thing in the front end side or in the HTML document. And if you want to put this button towards or on the next line, you can add a page break over here. So here you can mention something like BR tag. So you know this very well. This will be adding some empty lines over there, or the line break. And in this case, if you refresh this one, so now there is some gap we got, and now this is on the next line. Okay, so likewise, you can design the front end side. Now it's fine. But now once I will click this button, where the result will be shown. So it should be displayed somewhere at the bottom side over here. So that's what we will try. So after doing this, the result must be displayed over here. Now for that purpose, I will be adding one text field, or small, you can add just a label also. Okay, a small label we will be adding over there, and obviously let's add a break over here, and then you just add a label tag, and it should be in some heading. It should have some heading, so it will be h3, not needed, but in order to make it heading kind of look, so I'm putting it as heading. So it will be prediction equals to, and something here will should be there. Okay, so now right now it will be just a prediction, and if you refresh, then here it will be a prediction. But after the colon, there will be a result that we will have to pass from the Python side.
Okay, so right now what you will have to understand. So here whatever values we will put, that the Python code must receive all these values, and it should process all these values, and after processing all such values, it should it should return the result to our website or to HTML document. So now the Python will take these two values. So if I type something here, this will be taken by our Python code, and the Python code will process all those things. It will train that machine learning model and everything in the Python side. And after doing all these things, Python will generate the result, and that result will be passed to this front end side or to this web application or to this HTML file. So that's what we are interested in. So now we are done with this HTML document. Still few things are required, but right now we will be keeping this as it is. So now we will go inside the Python code and we will see what changes we can make in the Python. So as far as this is concerned, so whenever I will be going on this route and whenever I will be clicking some button, some actions has to be done. And in that case, it should load our data set. So it should load this data set, then it should train our classifier, and once the classifier is trained, then all these values should be taken from the web application or from our website, and that must be given to this classifier, and then classifier should predict something, and then it will give some result. So already we are having this code. So instead of copying this entire code in the my site, what we will do, we will make this as a module. Okay, this file, we will convert this Python script to module, and we will import this file in our code. Okay, so just remember the previous things that we have done in case of functions, modules, and packages. Same thing, exactly same thing we will be doing here. So instead of copying all the code from this and pasting over here, that's also fine. But this will make this is more complicated and not easy to understand. But if I can convert this code to a module and then I can import this thing in this file, that will be a great thing. So how it can be done? So first of all, let's see these things. Everything will remain as it is. And now this thing is actually we are not interested in this prediction. This prediction was actually happening on the terminal window, so we don't need this kind of thing. So what we can do here, def predict purchase, will create a function over here. So let's create a function, and in this function, uh, or this will be a test sample will be the input to this function. Okay, तो हम क्या कर रहे हैं effectively? What we are doing, we are creating a function, and this function will be called when only when we will make call to this particular function. And now here the test sample will be the input to this function. And now what we can do, we can just use here result equal to, first of all we need to actually scale that test sample. That's what we actually need required to do. So first of all, this sc dot transform, okay, and this test sample, test underscore sample, and of course this has to be in the form of two-dimensional array. But what we'll do, we will be passing one-dimensional array. So in order to convert it into two-dimensional, we'll be adding one bracket over here. So this is standard scaler scaling the values, and then result equals to this classifier dot predict function, right? And then we need to provide this test sample, test underscore sample, and then we can return this result of zero value, first value in that result. Now how it can be called, let's say age equal to 19 and salary equals to, let's say, 19,000, and then test sample
equals to one dimensional array. We will create this age, comma, this salary. Okay, so now here it is created as one dimensional array, and now here we are adding again one dimension, so it will become two dimensions. So now the sc dot transform can be applied to it, and it will convert into some another scale, and then this will be a standard scaling for this. And after that, the classifier dot predict function will predict the result, and the result can be 0 or 1. So here, from here, actually we're going to return the result, whether it will be a 0 or 1 kind of thing. And here you can write print, or you can make the call to the predict purchase function. So this will be predict purchase, and this test sample. Okay, so this test sample is passed. Now just stop this Python and just run this code. Now you see here it has been training the data test sample, spelling error somewhere. Okay, here it is sample, here it is again the sample, and where test underscore. Okay, I think here is the problem in the spelling. So this is sample. Okay, now it should be fine. And now we are running this one, and now as you see here it is printing 0. That means the user is not going to purchase the car. So now this is tested. Now this function is now tested, so we are not interested in this. Now this is tested. Now this is the Python file which is having a function in it, and this function is predict purchase function. So we want to import this module in our main Python file, that is mysite.py, and from this file we will be making call to this file or this function. Okay, so once this function will be called, we will pass some test sample. We will pass age and salary from our website to this one, and this function will be get called, and once it will call, this will return the result, and this result we will use there. Okay, now what I want to do, I want to write like this: from knn classifier import predict purchase. Right, this thing I will need to do. Now the predict purchase function is imported from where? knn classifier. So this is the function which is present inside the knn classifier.py module, and from that module I have imported this function. Now here what I will be doing, I will be making simple call to this function, and once the call is made, I will be able to get it, or I will be able to get the results of it, and that will be a very much interesting thing. Okay, now it's really very interesting and simple thing. So for now, if you want to check how it will work, for example, if I write age equal to 19, so I'll take some variables over here, and the salary equal to 19,000, for example. So in this case I'm not passing these values to the or I will not going to type there. And then test sample I will create over here. Test sample equals to this age, comma, salary. Okay, and now the result equals to predict purchase, this function, and the test sample is input to that. All right, so this is how. And if you want to print here, print result, or you can write here result equal to result equals to whatever we will get that result. Okay, and they render that template. That's it. So now the function, this function predict purchase function, will be called when I will hit this URL. So for now I will be closing this URL, and this predict function, or this predict purchase function, will be called whenever I will open this website. So for now I will be clearing this terminal, and it will be printed on the terminal itself. So result will be printed here only. Right now we are not sending the result to our website.
सो यहाँ से अभी वेबसाइट को या फिर वो फ्रंट एंड में कुछ जा नहीं रहा है, जो कुछ भी प्रिंट होगा यहीं पे प्रिंट होगा। लेकिन आई वांट टू शो यू कि जब मैं इसको रन करूंगा तो इस प्रेडिक्ट परचेज को कॉल किया जाएगा जो कि इस फाइल के अंदर है, और जो भी ये 19,000 यहाँ पे लिया जाएगा और उसका रिजल्ट यहाँ पे प्रिंट होगा इस टर्मिनल विंडो में, ना कि वेबसाइट पे। तो चलो इसको पहले रन करेंगे हम। सो लेट्स रन, एंड वंस इट इज रन एवरीथिंग इज टेकन। नाउ दिस इज रनिंग, बट यहाँ पे कुछ प्रिंट हो रहा है क्या? रिजल्ट इक्वल टू कुछ भी प्रिंट नहीं हो रहा है। लेकिन जब मैं यहाँ पे डालूंगा लोकल होस्ट कोलन 5000, तो ये ओपन हुआ। लेकिन इंटरेस्टिंगली आप यहाँ पे देखोगे कि रिजल्ट इक्वल टू 0 यहाँ पे प्रिंट हुआ। ओके, सो वी गॉट दैट रिजल्ट ओवर हियर। सो दैट्स द इंटरेस्टिंग थिंग कि हम यहाँ पे किस तरह से फंक्शन को कॉल कर सकते हैं, किस तरह से हम एक मॉड्यूल क्रिएट कर सकते हैं, एंड देन हाउ वी कैन डू दैट। नाउ अगर आप चाहते हो कि यहाँ पे जो रिजल्ट है, वट एवर रिजल्ट यू आर हैविंग ओवर हियर, ये जो रिजल्ट है यहाँ पे, अगर आप चाहते हो कि ये जो रिजल्ट है वो अपने वेबसाइट को जाना चाहिए, तो आपको यहाँ पे इस वाले रेंडर टेम्पलेट के अंदर एक आर्गुमेंट पास करना पड़ेगा, एक वेरिएबल रिजल्ट इक्वल्स टू रिजल्ट। तो ये जो रिजल्ट है ये एक आर्गुमेंट है या फिर एक वेरिएबल है जो हम इसको पास कर रहे हैं, एंड दैट इज दिस रिजल्ट, उसका वैल्यू होगा ये रिजल्ट। तो ये जो रिजल्ट वेरिएबल है ये हमें ऐड करना है, कहाँ पे डिस्प्ले करना है, कौन से लोकेशन पे? तो यहाँ पे डिस्प्ले करना है। तो यहाँ पे अगर उसको डिस्प्ले करना है तो वो डबल करली ब्रैकेट्स के अंदर यहाँ पे रिजल्ट इस तरह से लिखना होगा। सो वंस यू राइट हियर, तो ये जो रिजल्ट है दिस वन इट इज इन डबल करली ब्रैकेट्स। तो ये रिजल्ट आएगा कहाँ से? यहाँ से जो अपने पास किया है ना ये रिजल्ट, दिस रिजल्ट इक्वल टू दिस रिजल्ट। ये रिजल्ट जो है ये वैल्यू है, ये वेरिएबल है, एंड दिस रिजल्ट इज करस्पॉन्डिंग टू द HTML फाइल। तो अब हम इसको करेंगे रिफ्रेश, एंड फिर से हम इसको क्लोज करवा देंगे दिस वन, और यहाँ पे आते हैं। तो नाउ नथिंग इज प्रिंटेड ओवर हियर। अब वेब एप्लीकेशन पे हम जाएंगे, एंड यहाँ पे लोकल होस्ट कोलन 5000। तो अब क्या आया यहाँ पे? रिजल्ट इक्वल टू 0। अगर रिजल्ट 0 है इसका मतलब the person is not going to purchase the car, or that user is actually not going to purchase that car। इसका मतलब सीधा है कि वो कार को परचेस नहीं करने वाला है। ओके, नाउ ये तो समझ में आया कि यहाँ से किस तरह से हम जाएंगे रिजल्ट। और अगर आप यहाँ पे थोड़ा सा और इसको इंप्रूव करेंगे कि इफ रिजल्ट इक्वल्स टू 0, अगर रिजल्ट 0 है तो हम रिजल्ट का वैल्यू अपडेट करेंगे। रिजल्ट इक्वल टू यहाँ पे लिखेंगे the person or the user will not purchase the car, right? Else अगर उसका रिजल्ट 1 होगा, else result equals to, यहाँ पे हम लिखेंगे the user will purchase the car, right? तो इस तरह से होगा। तो नाउ इफ यू रन इट ना, तो यहाँ पे रिजल्ट कंप्लीटली आपको अलग मिलेगा। इंस्टेड ऑफ 0 अगर मैं इसको रिफ्रेश करूंगा, so सी द यूजर विल नॉट परचेज द कार। नाउ एक तो हमें समझ में आया कि किस तरह से हम पाइथन से जो कुछ भी वैल्यू है, जो कुछ भी डेटा है, वो हम किस तरह से HTML फाइल को भेज सकते हैं। यहाँ तक तो हमें समझ में आ गया कि हम किस तरह से भेजेंगे। लेकिन हमारा और एक ऑब्जेक्टिव है कि यहाँ पे जो हम टाइप करेंगे वो पाइथन में आना चाहिए। मतलब यहाँ पे जो 19 एंड 19,000 है वो हमारा पाइथन के थ्रू आना चाहिए। यहाँ पे एज इक्वल टू समथिंग फ्रॉम पाइथन के थ्रू आना चाहिए। ये हम यहाँ पे हार्ड कोडेड वैल्यूज है, यहाँ पे हमने डाल रखी है कि एज इक्वल टू दिस एंड सैलरी इक्वल टू दिस, लेकिन ये वैल्यू हमारी फ्रंट एंड से आनी चाहिए। सो दैट्स व्हाट वी आर इंटरेस्टेड इन। तो ये सब करने के लिए, वहां से वैल्यूज लेने के लिए दो इंपॉर्टेंट चेंजेस हमें करनी होंगी, अ, हमारे HTML कोड के अंदर भी और हमारे पाइथन कोड के अंदर भी दो इंपॉर्टेंट चेंजेस करने होंगे। तो पहले हम देखेंगे कि यहाँ पे क्या चेंज करना होगा। जैसे कि ये जो फॉर्म है,
यहाँ पे अभी इसका एक्शन वगैरह कुछ डिफाइन नहीं है। एक्शन मतलब जब भी ये फॉर्म सबमिट होगा तो उसका डेटा का क्या होगा, कहाँ पे सबमिट किया जाएगा, वो सारे एक्शन यहाँ पे मेंशन नहीं है। दूसरा, इसका मेथड कुछ भी मेंशन नहीं है। मतलब जैसे गेट पोस्ट मेथड होती है एचटीटीपी प्रोटोकॉल के अंदर, गेट एंड पोस्ट मेथड होती है, एंड दैट मेथड इज एक्चुअली यूज टू सेंड डेटा टू सर्वर और सर्वर से डेटा लेने के लिए यूज की जाती है। तो वो हमारा यहाँ पे कुछ मेंशन नहीं है, तो वो हम यहाँ पे ऐड कर देंगे। तो पहले तो एक्शन यहाँ पे ऐड करेंगे। सो एक्शन एम्प्टी रखेंगे, सो इट शुड नॉट सेंड डेटा टू। एक्शन का मतलब होता है कि यहाँ पे जब हम फॉर्म सबमिट करेंगे तो इसके अंदर जो भी यूआरएल आप लिखोगे या फिर जो भी फाइल का नाम डालोगे, जो भी यूआरएल का नाम डालोगे, उस यूआरएल को अपना डेटा सबमिट किया जाएगा या फिर सेंड किया जाएगा। वो हमें नहीं चाहिए। और क्योंकि यहाँ पे कम्युनिकेशन होने वाला है क्लाइंट सर्वर के बीच में, तो यहाँ पे मेथड यूज करना पड़ेगा। सो मेथड इक्वल टू पोस्ट मेथड हम यूज करेंगे, इससे हम डेटा सेंड कर पाएंगे टू सर्वर। ओके, तो यहाँ से हम पोस्ट मेथड और एक्शन उसका एम्प्टी या फिर नल रखेंगे, सो दैट इट विल बी not sending data to anywhere. Okay, so now this one change we need to do in the form, so that this will be a submittable form, and after submitting we can get the data. Now हम आएंगे पाइथन के अंदर, और पाइथन कोड के अंदर यहाँ पे हमें बेसिक सी चीज़ें यहाँ पे ऐड करनी होंगी। तो जब भी ये होगा, whenever this will happen, we will check if request, कौन सी रिक्वेस्ट यहाँ पे, रिक्वेस्ट डॉट मेथड इक्वल्स टू पोस्ट। तो क्या वहां से कुछ पोस्ट हुआ है या फिर पोस्ट रिक्वेस्ट हुई है, तो जाके, लेकिन ये सब करने के लिए यहाँ पे भी हमें उसकी मेथड्स को ऐड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम मेथड्स को ऐड कर देंगे, मेथड्स इक्वल्स टू, एंड दो मेथड्स हम लेंगे, गेट एंड पोस्ट। दिस इज एचटीटीपी प्रोटोकॉल, these are the http methods which are used to establish a communication. तो यहाँ पे these two things, get and post request will happen. So if the request dot method equal to post, that means if something is submitted or if the form is submitted there, in that case we will check if request dot form, okay, फॉर्म का अंदर का कौन सा फील्ड। अभी यहाँ पे फॉर्म के अंदर पहला फील्ड क्या है, एज है, दिस इनपुट इज एज, और दूसरा क्या है, सैलरी। तो पहले हम यहाँ पे लेंगे, सॉरी सॉरी, यहाँ पे इफ की जरूरत नहीं है अभी, तो यहाँ पे हम सीधा एज ले लेंगे ना, एज इक्वल्स टू रिक्वेस्ट डॉट फॉर्म, उसमें का एज ले लो, ठीक है। एंड देन सैलरी, सैलरी के लिए भी वही करो, रिक्वेस्ट डॉट फॉर्म, इसके अंदर से सैलरी ले लो। ये क्या होगा कि इस तरह से होगा अभी राइट नाउ, देन दिस इज नॉट रिक्वायर्ड, ये सब कुछ अभी नहीं चाहिए, क्योंकि हमने वहां से लेंगे इन सब वैल्यूज को, और इसको शिफ्ट करना होगा आगे, इसको भी करना होगा आगे, इसको भी हम आगे शिफ्ट कर सकते हैं, इसको भी आगे करना होगा, इसको भी आगे करेंगे, एंड दिस वन एंड दिस वन एंड ऑफ कोर्स दिस वन। लेकिन ये पोस्ट होने के बाद, लेकिन अगर पोस्टिंग नहीं होगा तो क्या डिस्प्ले करेगा, तो वहाँ पे कुछ तो HTML टेम्पलेट तो होना ही चाहिए, तो दिस शुड बी हियर ऑल्सो, लेकिन इसके अंदर ये रिजल्ट नहीं जाएगा, एम्प्टी दिखाएगा। Okay, now we got the age and then we got the salary from our website. If the request dot method equal to post, that means the form is submitted. Once the form is submitted, फॉर्म के अंदर जो एज का जो इनपुट बॉक्स है उसमें का जो भी वैल्यू है वो आएगा एज के अंदर, एंड देन उसके अंदर जो सैलरी वाला टेक्स्ट बॉक्स है उसके अंदर जो कुछ भी है वो आएगा सैलरी के अंदर। उसके बाद हम उसका एक टेस्ट सैंपल बनाएंगे और एक प्रेडिक्ट परचेस फंक्शन को दे देंगे। प्रेडिक्ट परचेस फंक्शन इसके ऊपर प्रेडिक्शन करेगा, और जो कुछ भी रिजल्ट है वो यहाँ पे पहले तो यहाँ पे प्रिंट करेगा, प्रिंट करने की अभी कोई आवश्यकता है नहीं, तो उसको ये कर लेंगे। तो अब रिजल्ट इक्वल टू अगर जीरो है तो हम बोलेंगे कि रिजल्ट का वैल्यू जो है वो चेंज करेंगे, द यूजर विल नॉट परचेज द कार। जीरो का मतलब है द यूजर विल नॉट परचेज दिस कार, एंड द वन का मतलब है अदर देन एनी वैल्यू देन जीरो का मतलब है यूजर विल परचेज द कार। और ये जो भी रिजल्ट है वो हम भेजेंगे इस वाले
कार डॉट एच टी एम एल फाइल के अंदर रिजल्ट जहाँ पे लिखा हुआ है वहाँ के अंदर, मतलब यहाँ पे रिजल्ट लिखा हुआ है तो इसके अंदर वो वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया जाएगा, लाइक दिस। तो अगर आप चाहते हो कि ये एज और जो सैलरी है जब भी हम करेंगे तो वो भी यहाँ पे चाहे तो यहाँ पे भी वो इस तरह से हम डाल सकते हैं, लेकिन राइट नाउ यहाँ तक पहले हम टेस्ट करवा लेते हैं कि क्या एवरीथिंग इज वर्किंग फाइन। तो यहाँ पे और एक दिक्कत है, और एक स्मॉल थिंग है जो हमें यहाँ पे चेक करनी होगी, यहाँ पे टेस्ट करनी होगी, और वो है ये जो फील्ड यहाँ से आएगा ये टेक्स्ट होगा, एज रिक्वेस्ट डॉट फॉर्म टेक्स्ट होगा। यहाँ से भी जो कुछ भी हमें मिलेगा वो टेक्स्ट होगा, तो उसे इंटीजर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो इंटीजर में कन्वर्ट करने के लिए हमें सिंपल मेथड पता है, यहाँ पे टाइप कास्ट कर दो, ये इंटीजर में हो जाएगा। फिर यहाँ पे भी टाइप कास्टिंग कर लो, and then this will be converted to integer form. Okay, now this is now everything seems to be good. तो अब हम इसको सेव कर लेंगे, सर्वर हमारा रिस्टार्ट कर चुका है, एंड अब हम इसको क्लोज कर देंगे और फिर से यहाँ पे लोकल होस्ट को इनिशियलाइज कर देंगे। नाउ द लोकल होस्ट हैज स्टार्टेड, वेबसाइट इज ओपन, एंड यहाँ पे अभी मुझे चाहिए यूज़र की जो सैलरी है तो 19 में डाल दूंगा, एंड 19,000 I will be entering, and then I will click on this predict button. Once I click, यहाँ पे मुझे रिजल्ट मिला, the user will not purchase the car. तो अगर मैं दूसरा कुछ ट्राई करता हूँ, लेट्स से 45, एंड उसका जो सैलरी है 80,000, और आप चेक करेंगे तो इन दिस केस यूजर विल परचेज दी कार। तो ये एक फंक्शनिंग तो कर रहा है, लेकिन यहाँ पे जो वैल्यूज हम डाल रहे हैं वो निकल जा रही है जब ये पेज रिफ्रेश हो रहा है। बेसिकली दिस पेज इज गेटिंग रिफ्रेश्ड, तो यहाँ पे जो भी हम वैल्यू डाल रहे हैं वो निकल के जा रहे हैं। तो वो वैल्यू भी अगर हमें चाहिए तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं एज इक्वल टू एज, एंड देन सैलरी इक्वल्स टू सैलरी। तो ये दो फील्ड मुझे कहाँ पे ऐड करने होंगे, इसके अंदर ऐड करना होगा। तो यहाँ पे जो अपना जो ये टेक्स्ट फील्ड है इसका जो नेम तो दिया है लेकिन वैल्यू उसका दिया नहीं, तो वैल्यू हम दे देंगे डबल कर्ली ब्रैकेट के अंदर एज, जो कि हमने वहां से पास किया, राइट। और इसका भी वैल्यू हम यहाँ पे दे देंगे, वैल्यू इक्वल्स टू डबल कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर सैलरी। तो जहाँ पे भी आपको वो डिस्प्ले करना है वहाँ पे आपको इस तरह से उसको ऐड करना होगा। तो ये हो गया सेव, एंड इसको भी हमें सेव करना होगा। सैलरी इज हैविंग एनी ट्रबल, नो ट्रबल्स, ओके। नाउ अगर आप यहाँ पे डालोगे कुछ वैल्यू, लेट्स से 40, लेट्स से 19, एंड लेट्स से 20,000, तो अब हम करेंगे प्रिडिक्ट। तो यहाँ पे देखिए 19 and 20,000 is remaining as it is and the user will not purchase the car, ये यहाँ पे लिख के आ गया। Okay, so this is how the project can be developed, and now ये simple thing of कुछ भी और anything if you want to develop you can actually create using this. Now हम देख सकते हैं इसका basic thing is you have to create this mysite.py एंड देन कार डॉट एच टी एम एल, और इसके अंदर कुछ तो फॉर्म होगा। तो फॉर्म के अंदर राइट नाउ वी आर हैविंग ओनली दिस फील्ड्स, बट इन योर केस अगर आप कुछ और प्रोजेक्ट करना चाहते हो तो यहाँ पे मल्टीपल फील्ड्स होंगे। तो ये एक टेम्पलेट की तरह आपको यहाँ पे बन चुका है। एंड नाउ यहाँ पे हम एक जो अपना प्रीवियस कोड जो हमने पाइथन के फाइल्स बनाए हैं उसी को यूज करेंगे, थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे। क्या मॉडिफाई करेंगे, उसके अंदर एक फंक्शन ऐड कर देंगे और इस फंक्शन को एक आर्गुमेंट भी दे देंगे और यहाँ से उसको रिटर्न करने को बोलेंगे। तो यहाँ से रिटर्न करेगा तो हमें उसको हम कैच करेंगे यहाँ पे हम उसको पहले इंपोर्ट करवा लेंगे एंड कैच करवा लेंगे यहाँ पे। तो ये तो एक वेबसाइट एक सिंपल बन गई जो कि अब आपके मोबाइल फोन के अंदर भी काम करेगी। अगर आपने यहाँ पे रन कर दिया ये सर्वर, एंड अगर आपने आपके कंप्यूटर का आईपी एड्रेस आपके मोबाइल फोन में डाल दिया, तो आपको मतलब दैट आईपी एड्रेस कोलन 5000 जो कि मैंने लास्ट सेशन में इन एस्टरडे सेशन आई हैव टोल्ड यू हाउ टू डू दैट, अगर वो आपने कर लिया तो ये सारा चीज आपके मोबाइल फोन के अंदर ओपन होगा और मोबाइल फोन के थ्रू आप यहाँ पे इनपुट दे पाओगे, एंड आफ्टर गिविंग दोज इनपुट फ्रॉम योर मोबाइल फोन आप यहाँ पे इजीली चेक कर पाओगे कि वो कार परचेस करेगा नहीं। तो मतलब आपके मोबाइल फोन से भी ये काम करेगा, कहने का मतलब है मॉरल ऑफ द स्टोरी। नाउ यहाँ पे थोड़ा सा हम डेकोरेशन कर लेंगे। तो नॉट मच, क्योंकि जितना मतलब ऐसे नहीं कि पूरा ये कर लेंगे, लेकिन
ये जैसे मैंने बोला कि HTML कोड जो होता है वो यूज़ किया जाता है वेबसाइट का जो भी कंटेंट है वो डिस्प्ले करने के लिए। लेकिन इसका जो स्टाइलिंग है, इसका कलर्स, इसका फॉन्ट, इसका बैकग्राउंड कलर, ऑल दोस थिंग्स, ये सब कुछ होता है CSS के थ्रू। और जिसे हम स्टाइल शीट भी बोलते हैं, और HTML कंटेंट को कलर्स या फिर उसका स्टाइलिंग करने के लिए CSS फाइल यूज़ किया जाता है। तो CSS फाइल यूज़ करने के दो तीन तीन जनरली मेथड्स है। एक तो है इनलाइन CSS, जो कि आपको पता ही होगा कि जिसके अंदर HTML टैग के अंदर ही CSS का स्टाइल टैग यूज़ करके वहाँ पे स्टाइलिंग किया जाता है, दैट इज़ इनलाइन CSS। इंटरनल CSS होता है जिसके अंदर हेड के अंदर, ये हेड टैग के अंदर आप यहाँ पे CSS का कोड ऐड कर सकते हो। एंड एक्सटर्नल या फिर यहाँ पे भी इंटरनल CSS और या फिर स्टाइल टैग मेंशन करके यू कैन हैव द CSS और स्क्रिप्ट वगैरह भी कर सकते हो इवन। एंड देन एक्सटर्नल CSS होता है जो आपको उसका जो स्टाइल शीट है वो यहाँ पे हेड के अंदर आपको मेंशन करना होगा कि कौन सा स्टाइल शीट आप इस फाइल को एम्बेड कर रहे हो या फिर इंक्लूड कर रहे हो, दैट थिंग। तो उतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हम नहीं करेंगे, वी विल बी हैविंग वेरी सिंपल थिंग। तो यहाँ पे ये जो बॉडी है, बॉडी मतलब ये पूरा वेबसाइट का ये सब कुछ, ये जो वाइट कलर का दिख रहा है ये सब कुछ, ये एंटायर थिंग, दैट्स द बॉडी। ओके। तो इसको हम कुछ कलर दे देंगे। तो इसके अंदर जो बॉडी है उसको हम यहाँ पे लिखेंगे स्टाइल। तो स्टाइल के अंदर हम दे देंगे बैकग्राउंड कलर, और बैकग्राउंड कलर में लेट्स से येलो ग्रीन कलर हम इसको असाइन करेंगे। ठीक है, येलो ग्रीन का हो जाएगा बैकग्राउंड। तो अगर हम अब इसको रिफ्रेश करेंगे, ओके, इट्स आस्किंग फॉर रीसबमिशन द फॉर्म। तो मैं इसको क्लोज करता हूँ एंड फिर से लोकल होस्ट ओपन करता हूँ। सी we are getting this background color now is changed to the yellow green color. This is yellow green color, that's how I'm getting the background color. Now it थोड़ा अच्छा दिख रहा है। तो और थोड़ा हम चेंज कर सकते हैं। मैं चाहता हूँ कि ये जो कंटेंट है ये सारा, दिस शुड अपीयर एट द सेंटर ऑफ दिस बॉडी। तो ये जो बॉडी है इसको कम्प्लीटली हम सेंटर आउट कर देंगे। तो उसके लिए सिंपल मेथड है कि हम यहाँ पे सेंटर टैग को यूज़ करेंगे। एंड ये जो सेंटर है वो हम इसको एट द एंड भी ऐड करेंगे। तो ये सारा जो है ये सेंटर में आ जाएगा, दिस एवरीथिंग, दिस एंटायर बॉडी विल बी एट द सेंटर। तो अब अगर हम इसको रिफ्रेश करवाएंगे, सो नाउ वी कैन सी हियर, नाउ वेरी इंटरेस्टिंगली एवरीथिंग इज नाउ एट द सेंटर। तो ये जो यहाँ पे था वो हम अब हमारे यहाँ पे सेंटर में हो चुका है। तो इस तरह से यहाँ पे आएगा। तो इफ़ यू वांट टू चेंज सम कलर्स देन यू कैन डेफिनेटली चेंज। फॉर एग्जांपल ये कार परचेज प्रिडिक्शन, इसको हम रेड कलर में करना चाहते हैं तो उसको हम रेड कलर में भी करवा सकते हैं। तो ये अपना है हेडिंग। तो दिस इज H1 हेडिंग। तो इसको H1 को हम स्टाइल दे सकते हैं, और इसका जो स्टाइल है दैट विल बी अ कलर। तो इसको हम स्टाइल कर सकते हैं। यानी इसका कलर, कलर मतलब टेक्स्ट कलर होता है, और बैकग्राउंड कलर मतलब बैकग्राउंड डैश कलर मतलब वो बैकग्राउंड का कलर होता है। इसको हम रेड कलर कर देंगे, सो रेड कलर हो जाएगा इसका। एंड नाउ इफ यू रिफ्रेश योर पेज, नाउ दिस विल बी इन रेड कलर। तो ये रेड कलर में हो गया, ये इस तरह से होगा। अगर आपको इसके कुछ फॉन्ट्स वगैरह इंक्रीज करने हैं, दिस दिस वो भी आप कर सकते हो। एंड फॉर दैट अगर ये जो इनपुट है जो कि टेक्स्ट है इसका अब हम स्टाइल करवाना चाहेंगे। एंड इसका जो फॉन्ट है उसका साइज़ हम लार्ज रखेंगे, और ये भी जो इनपुट है इसका भी हम स्टाइलिंग करवा देंगे, और इसका फॉन्ट साइज़ दे देंगे, लार्ज दे देंगे। ओके। तो ये हो गया इसका। और जो ये बटन है इसका भी फॉन्ट साइज़ हम इंक्रीज करेंगे, फॉन्ट साइज़ इसको हम लेट्स से लार्जर कर देते हैं इस तरह से। नाउ हम इसको रिफ्रेश करेंगे। तो रिफ्रेश करने से यू सी दिस थिंग्स एंड देयर फॉन्ट इज नाउ इंक्रीज, नाउ इट्स क्वाइट गुड, इट्स लुकिंग क्वाइट गुड। तो इस तरह से हम इसको कर देंगे। और ये जो प्रिडिक्शन है, लेट्स से ये अभी ब्लैक कलर में प्रिंट होगा, अगर इसका कलर ब्लू करना चाहते हैं तो इन दैट केस ये जो प्रिडिक्शन है जो हेडर है या फिर इस दिस एंटायर लेबल यू कैन चेंज द स्टाइल ऑफ दिस स्टाइल, और इसका कलर
एंड देन लेट्स से ब्लू कलर कर देंगे, तो ये ब्लू कलर होगा यहाँ पे, तो ये ब्लू में हो जाएगा। एंड देन सेव, एंड देन you can rephrase this thing. Now this is turned into a blue color. Now yay, it's now looking quite good than the previous one. So this how the web application can be developed or the website can be built. Now यहाँ पे हम डालेंगे हमारे value. So this is 19 and this is 19,000 and then predict. So now the user will not purchase the car, but if the age is 45 and the salary is 80,000, let's say, and in this case if you predict, the user will purchase the car. Now it is functioning very fine. Now if you want to do this in your mobile phone, तो आपको यहाँ से server को run करना है. Then you just find out the IP address of your computer. In order to find out the IP address, now simple thing is ipconfig/all. ये बेसिक कमांड है जिससे आपको आईपी एड्रेस मिलेगा आपके कंप्यूटर का, और आपके कंप्यूटर का आईपी एड्रेस होगा यहाँ पे वायरलेस लैन अडाप्टर वाईफाई सेटिंग्स के अंदर, और यहाँ पे आपका आईपी एड्रेस है वंस IPv4 एड्रेस आपको फाइंड आउट करना है, एंड दैट इज दिस एड्रेस 172.20.10.2. नाउ दिस इज माई कंप्यूटर्स आईपी एड्रेस, दिस इज नॉट योर कंप्यूटर्स आईपी एड्रेस, ये मेरे कंप्यूटर का आईपी एड्रेस है. तो ये अगर मेरा मोबाइल फ़ोन एंड माई कंप्यूटर इज़ इन द सेम नेटवर्क, तो मैं वहाँ पे उसको एक्सेस कर पाऊँगा. सो नाउ यहाँ पे अगर उस एड्रेस से भी हम ओपन करेंगे ना यहाँ पे, तो आपके मोबाइल फ़ोन का कोई भी ब्राउज़र होगा, मे बी गूगल क्रोम, फायरफॉक्स और मे बी दी सफारी ब्राउज़र यू मे बी हैविंग, तो उसके अंदर आपका आईपी एड्रेस :5000, यू शुड नॉट फॉरगेट :5000. Okay, otherwise you will just put the IP address and you will try to check, but it will not work. So :5000 is mandatory because it's a port number, and just hit enter, then there also it will open. तो वहाँ पे भी ये काम करेगा. और क्योंकि ये वेबसाइट ये मल्टी थ्रेडिंग होता है, यहाँ पे आप अलग अलग जगह ये वेबसाइट काम कर सकते, क्योंकि ये सर्वर के थ्रू काम करेगा ना, कितने भी रिक्वेस्ट सर्वर हैंडल कर सकता है. तो अगर आपके पास 4 डिवाइसेस है और एट अ टाइम आप उसको वैल्यूज दे रहे हो, 4 अलग-अलग लोग दे रहे हैं, तो भी कोई प्रॉब्लम होना नहीं है, क्योंकि जस्ट लाइक लेट्स से फेसबुक का वेबसाइट है या फिर यूट्यूब का वेबसाइट है, वेबसाइट तो एक ही है लेकिन यूजर्स यूजर्स बहुत ज़्यादा है. तो एट अ टाइम मैं कुछ अलग वीडियो देख रहा हूँ, आप कुछ अलग वीडियो देख रहे हो, तो वो हो सकता है. तो वैसे ही अपना जो अभी ये वेब एप्लीकेशन बनेगा, अगर इसके यूजर्स मल्टीपल है, तो एट अ टाइम मल्टीपल यूजर्स को ये प्रोसेस करेगा या फिर मल्टीपल यूजर्स को ये हैंडल कर सकता है, उनके सारे रिक्वेस्ट को हैंडल कर लेगा. सो दिस हाउ द कंप्लीट वेब एप्लीकेशन कैन बी बिल्ट फॉर एनी प्रोजेक्ट, एनी मशीन लर्निंग प्रोजेक्ट, एंड नाउ इट कैन बी होस्टेड ऑन द लोकल होस्ट, and the service can be available on the mobile phone. So mobile phone ke through you can access your service. So this is very interesting thing that we have seen over here, and you just try it on, and also you try this thing on your mobile phone, try to operate everything from your mobile phone, and you get give a try. And now you can do house price prediction like this, or even the car sales prediction, salary prediction you can do, or anything you can do, or even mileage prediction of the car, stock price prediction, anything can be done. And for that, this kind of thing can be designed. And if you are already familiar with the CSN and HTML, you can even design this thing or you can have a better design than this. But at least if you are not having any knowledge of CSS and HTML, those who are not from the computer science background may not have any knowledge of HTML and CSS. So for them, not to worry. So I will be providing this HTML codes and this basic things. You just try here different colors and these things. So only this thing is expected from you, as this is machine learning stuff, not the HTML CSS is just an to develop the web application or some GUI to your application. So you can just try this, and those who are very much good, they are having the previous knowledge of HTML and CSS or even the JavaScript, they can design a beautiful website using this kind of thing. So with this we will conclude with today's session. In the next session we will see how we can upload files or images. Now this is for the supervised machine learning projects. Now you can try the naive Bayes classifier, and you can also try displaying some accuracy of your network can be, or that classifier can be displayed over here, so you can add that things here.
And for our other project like deep learning projects, this can also be fine for your NLP projects also. Now we have seen the NL project like spam SMS detection. So you can type the SMS content over here and just predict whether it is spam or not spam. You can print it out over here. So just try that using this kind of structure. And secondly, for the deep learning, that's image classification, brain tumor detection. So in that case, we will have to upload the image file over here, and that image file Python must receive. And after that, the Python will be processing that file, that image, and after that it will predict whether the user is having the brain tumor or not. So that is different stuff that we have to do. So in the next lecture we will be focusing on that thing, how we can upload the files, how we can upload the images to our web application, and after uploading the images, how we can predict whether this is having the brain tumor or not. And obviously you can use teachable machine and the transfer learning method or the learning from the scratch approach. So you can use anything, and you can do any deep learning project. So it can be the brain tumor detection, lung cancer detection, plant leaf disease detection, or anything you can try. Wherever image classification is required, you can try that and you can implement that thing. So in next lecture we will be discussing that thing, but for now, this is the end for today's session, and we will wait in the chat. If you are having any queries and doubt regarding the today's session, you may put in the chat.